ഇന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏക്കർ ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसलिए जो लोग आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ, ये जो हम लोग खड़ा है, ये आप जो देख रहे हैं गार्डन है, ये गार्डन का एक विशेष वार्ता आज देने के लिए हम लोग आया है। यहाँ में देखिए इतना सा जमीन आज बिक्री करने वाला है। ये जमीन तो अगर आपका शेयर की वजह से अगर आप ये जमीन को नहीं लेना चाहते, नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपका एक शेयर से ये जमीन जो सेल हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक जमीन है। मैं पूरा दिखाऊंगा साइड में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। और प्लीज़ आप लोग मेरा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। तो इसके बारे में मैं बताऊँ पहले कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन बिक्री करने के लिए, मतलब हम लोग इस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये जो एरिया है, मतलब कितना बड़ा एरिया है, वो एरिया आज वो बिक्री करने वाला है। मेरा पास जो एक आदमी देख रहे हैं, उनका ये ज़मीन है और ये ज़मीन उन्होंने आज बिक्री करेगा, तो इसलिए इस वीडियो को मैं बनाया। तो इस ज़मीन के बारे में हमारा अंकल है, उन्होंने वो बताएगा कि इसका ज़मीन का मतलब कितना बड़ा है और कितना में वो लोग बिक्री करेगा, तो उसका डिटेल्स वो पूरा बताएगा। ഹലോ ഹോയ്സ്, ഞാനെന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതായത് കട്ടപ്പനയിൽ നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഒരേക്കർ വരുന്നൊരു ഫ്ലോട്ട്, ടാറിങ് റോഡിൻ്റെ ഇരു സൈഡിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന അരേക്കർ വീതമുള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ട്, മൊത്തം ഒരേക്കർ. ആ ഫ്ലോട്ട് പഴയ പട്ടയമാണ്. അത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം വിറ്റേക്കാമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാന്ന് വെച്ച്. അതിമനോഹരമായ ഒരു ഫ്ലോട്ടാണ്. ഫ്ലോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും വാസയോഗ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏലകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ മുളക് പൊടി ചെയ്യുന്നതിനും കാപ്പി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം പറ്റിയ ഒരു ഫ്ലോട്ടാണ്. ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർവെല്ല് വെള്ളമുണ്ട്, സുഖമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഒരു ക്ലൈമറ്റാണ്. റോഡിൻ്റെ ഇരു സൈഡിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ഒരേക്കർ പഴയ പട്ടയമാണ്. ഇത് വിറ്റേക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇത് താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ സ്ഥലം വന്ന് കാണുകയും ഈ ലിങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ നമ്പറിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ये वीडियो का जरिए से कस्टमर मिले तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने शेयर करेंगे तो दूसरे के बाद ये वीडियो पहुंचेगा और वो लोग देख के वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसका वीडियो में मैंने इसका फ़ोन नंबर और डिटेल्स एड्रेस वगैरह मैंने यहाँ रखा हुआ है। जो बंदा ने इस ज़मीन को नहीं ले सकता है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका शेयर का वजह से ये ज़मीन सेल हो सकता है। ये कुछ फ़नी वीडियो नहीं है, ये कुछ मजाक का वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने देखकर आपने ले सकते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हैं तो आप शेयर कीजिएगा। तो आया है रूट का राइट साइड में, मतलब रूट, ये रूट भी है, रूट का 2 साइड में है। इसका लेफ्ट साइड राइट साइड में हम लोग आया है, और जो लेफ्ट साइड का जो जगह है वो मैं भी उसमें भी दिखाऊंगा। हमें देखिए ऐसा हर चीज़ है यहाँ में, जितना गार्डन है ना, आपको कटहल चाहिए, कटहल है, आम का पेड़ है, मतलब लगाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप खेती कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी गार्डन बना हुआ है, उसका बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। मतलब हर फल का पेड़ यहाँ में मिल जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि देखिए, लेफ्ट साइड गाड़ी जगह लेफ्ट साइड दिखाऊंगा, और यहाँ में देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए ये पूरा गार्डन है। मतलब यहाँ में एक देखिए आम का भी है, अनार का भी है, कटहल का भी है, हर सामान का जो मतलब पेड़ यहाँ में है। तो आप लोग लेंगे तो बहुत ही रोड अच्छा से आप लोग जी पाएंगे यहाँ में। इसके लिए देखिए, और ये जो है लेफ्ट साइड का है, देखिए ये है हमारा रूट है। तो हम लोग जो अभी आप लोगों को दिखाया था वो साइड में था, ये राइट साइड में था। अभी जो हम लोग दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये है लेफ्ट साइड का। तो यहाँ में भी बहुत ही एक बड़ा सा जगह है, एरिया बहुत बड़ा है। जो लोग
ले सकता है, आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। ये ज़मीन को उन्होंने बिक्री करना है वाला है, और ये ज़मीन का जो प्राइस है आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे वो लोग बता दिएगा कि आप लोगों को कितना मतलब रुपया देना पड़ेगा ये ज़मीन के लिए। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये रोड साइड का है, ये आप लोग आराम से, हमें आपका खुद का कार पार्किंग आप लोग आराम से बना सकता है ये साइड में। ഹലോ ഗൈസ്, ഈ വീട് കൊടുത്തേക്കാന്നൊരു പ്ലാൻ എനിക്കുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയോട് കൂടി അനുബന്ധിച്ചൊരു അവിടെ നിന്നൊരു 1/2 കിലോമീറ്റർ കഷ്ടി ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീടുമായിട്ട്. വീട് സെപ്പറേറ്റാണ്. 4.5 സെൻറ്റ് പഴയ പട്ടയം, 24 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സംഭരണിയുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചു ഫാമിലിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു വീടാണ്. 3 ബെഡ്റൂം, ഹാള്, സിറ്റ് ഔട്ട്, കിച്ചൺ അടങ്ങിയതാണ്. റോഡുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും വണ്ടി വരുന്നതിനും എല്ലാം സൗകര്യത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു വീടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ലിങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഇത് പറയാനുള്ളൂ. तो अब जो हम जो खड़ा है ना, ये इसका घर है, मतलब ये है उन लोगों ने वो सेल करने वाला। तो पूरा मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि इसका जो घर मतलब कैसा है दिखने में, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। और मैं पहले कैसे होता था कि इसका ये जो घर है ना, ये पूरा घर लेके यहाँ में पानी का टैंक है, मतलब ये घर भी वो बिक्री करने वाला है, इसके लिए वीडियो है। ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം.